मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातों को लेकर आज आया हूँ। और टुडेज लेक्चर इज लेक्चर नंबर 9। बेटे मैं लेक्चर नंबर 9 आज करने वाला हूँ। F5 के लिए हम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। ACC के लिए कर रहे हैं, स्किल लेवल के लिए कर रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने के लिए कर रहे हैं। और आप सब रजिस्टर ओपन कर चुके हैं, कमर आपकी बिल्कुल सीधी है, मोबाइल फोन को म्यूट कर चुके हैं, बिकॉज आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको कॉन्सेप्ट में, मार्क्स में, मॉक टेस्ट में हेल्प करेगा। तो आप रजिस्टर ओपन करके ऊपर लिखिए जी, ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 9, चैप्टर नंबर 7, प्राइसिंग डिसीजंस। लेक्चर नंबर 9। आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 8 लेक्चर्स। बेटे मैंने अभी तक 8 लेक्चर्स डिलीवर कर दिए प्राइसिंग डिसीजन चैप्टर नंबर 7 में। और इस चैप्टर में मैं लगभग 19-20 लेक्चर्स मुझे ऐसा लगता है कि डिलीवर करने वाला हूँ, बिकॉज देयर आर सो मेनी डिफरेंट स्मॉल कंसेप्ट्स जिसके मुझे रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको देने। आपको समझ ही नहीं आएगा जब तक मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स नहीं दूंगा। बेटे कैप्लॉन में खाली मार्क करके नहीं पढ़ाना, पीपीटी से नहीं पढ़ाना, बैठ के नहीं पढ़ाएंगे। बेटे मैं फुल एनर्जी के साथ 101% रेगुलरली अपने रिकॉर्डिंग रूम में आज बैठ खड़ा हूं और आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप सभी अपना रजिस्टर ओपन कर चुके हैं, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। आइए दोस्तों, I have already discussed that when I say a pricing decision, price is the most important factor to determine for a ACCA, for a management accountant, for a finance manager, for a ACCA come CEO, for a ACCA come CFO। बेटे एक प्राइस ही तो है जो हमें डिटरमाइन करना है, जिससे पूरी दुनिया हिल सकती है। पूरी एंटिटी की जो हेल्थ है, जैसे ह्यूमन बॉडी की हेल्थ के लिए ऑक्सीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो फ्री में मिलता है, और उसकी इंपॉर्टेंस हमें कोविड की सेकंड वेव में आज से 10 साल पहले हुई थी, जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला और लोग मर गए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैं आपका हूं, आप मेरे। मैं आज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये बताने जा रहा हूं कि बेटे ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं ना, प्राइसिंग डिसीजंस, इससे आपकी रियल लाइफ में एक क्या कहते हैं अपडेशन होगी, एक ग्रूमिंग होगी, एक बदलाव आएगा। तो चलिए जी, हम शुरू करेंगे। ग्रेट गुड मॉर्निंग। माय थॉट्स, मेरी आज के विचार हैं कि आप कुछ भी कभी भी कर सकते हो। आपके मन में पूरा आपके पास कैपेबिलिटी है, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। आपने गाना बचपन में सुना होगा। मैं आज भी ये कह रहा हूं कि यू कैन अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट इन F5 ACCA स्किल लेवल। कौन है जो नहीं कर सकता? आप कर सकते हैं। भूपेश आनंद के लेक्चर लेने के बाद भी नहीं किया तो बेटा धिक्कार है जीवन पे। इन्हीं बातों के साथ आपको कहूंगा, कमर सीधी रख के बैठेंगे। लेक्चर 9 है। कमर सीधी होती है तो बेटे स्पाइनल कॉर्ड में मूवमेंट होती है, बॉडी में एनर्जी की। और इन बातों के साथ मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैंने फर्स्ट लेक्चर, मतलब ये 9th है, तो फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि प्राइस को कैसे डिटरमाइन करते हैं, और प्राइस कैसे आपके लिए डिसीजन क्राइटेरिया रहेगा, और प्राइस कैसे आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, और प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए कौन सी ऐसी 4 अप्रोचेज हैं। हमने सबसे पहली अप्रोच स्टार्ट की थी मार्केट बेस्ड अप्रोच, और मार्केट बेस्ड अप्रोच में मैंने आपको बताया था परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक अप्रोच। बिकॉज आप जिस मार्केट में हैं आपका प्राइस उसी के तरह से डिटरमाइन होगा, क्योंकि मार्केट डोमिनेटिंग फैक्टर है। आप एज ए एंटिटी डोमिनेटेड हैं। आपको मार्केट के हिसाब से चलना है, मतलब छोटे पापा को बड़े पापा के हिसाब से चलना है, बड़े पापा छोटे पापा के हिसाब से नहीं चलेंगे। इट मीन्स I have devoted 8 lectures for market based। तो मैंने क्या किया, 4 उसके छोटे छोटे मटके बना दिए। और अप्रोच नंबर 2 है डिमांड बेस्ड अप्रोच। हमने डिमांड की बातें की। डिमांड क्या है? लेक्चर 8 में मैंने कहा डिमांड क्या है, डिमांड होती क्यों है, इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, डिमांड फंक्शन क्या है, डिमांड कर्व क्या है, प्राइस इक्वेशन क्या है, प्राइस इक्वेशन ऐसे डिटरमाइन कैसे होती है, इसमें कौन सा इंडिपेंडेंट फैक्टर है, इसका कर्व कैसे बनाते हैं, ये नेगेटिवली स्लोप्ड कैसे है, पता नहीं क्या 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 क्या। लास्ट 52 मिनट्स का लेक्चर था बेटे। मैं खुद हैरान हो गया जब उस लेक्चर को देखा कि इतना कुछ मैंने एक ही लेक्चर में बता दिया। Now the point is there are 2 methods for calculating price. One is the algebraic and second is the tabular method. I have not told you anything about algebraic and tabular method.
because I have to firstly prepare the foundation in regard to algebraic method, that what is algebraic method, what are the foundation of algebraic method, what I mean by demand, what I mean by demand function, what I mean by demand curve. बेटे जब तक आपको पता ही नहीं होगा बेसिक चीजें, जैसे कहते हैं ना बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा और मकान, तो आप कैसे आगे वाली चीजें कर सकते हो यार। तो आप प्लीज रजिस्टर ओपन कर लें, लिखें। आपने पहले भी लिखा हुआ है, लेकिन ये अलग ढंग है बेटे आज लिखने का। मैं चाहता हूं कि आप लिखें, आप मेरे मैं आपका हूं। फर्स्ट पॉइंट आप लिख रहे हैं, प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए हम 4 घड़े बना रहे हैं। आए आप भी 4 ही तरह के मटके बनाए। फर्स्ट इज मार्केट बेस्ड अप्रोच, सेकंड इज डिमांड बेस्ड अप्रोच, थर्ड इज कॉस्ट बेस्ड अप्रोच, फोर्थ इज प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच। 4 अप्रोचेस हैं जो हमें समझनी है, करनी है। इसमें से आज हम दूसरी अप्रोच की तरफ हैं, डिमांड बेस्ड अप्रोच में हैं। लेक्चर नंबर 9 है, आई हैव ऑलरेडी डील विद लेक्चर नंबर 8। लेकिन इन सभी अप्रोचेस में हम प्राइस को डिटरमाइन करना चाहते हैं। And I have started with a demand-based approach. Within demand-based approach, there are 2 methods as per Kaplan and as per BBB, which we have seen. आज भी मैं आपको दिखाऊंगा. The first was algebraic method, जिसके बारे में मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया। आप कमर सीधी करके बैठे, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थप्पड़ मारूंगा खींच के, और लिखना शुरू करें। लिखना है, खाली अंडरलाइन करने से समझ नहीं आएगा, खाली पीपीटी देखने से समझ नहीं आएगा। मेरे लेक्चर को आप किसी दूसरे लेक्चर से कंपेयर करके देखो, एनर्जी फ्लो होती है बेटे। तो एल्जेब्रिक मेथड में आपको मैंने ये बताना है, टेबलर तो अभी बात ही नहीं करी, ठीक है ना जी, इसकी तो छोड़ ही दो बात। एल्जेब्रिक में आपको समझने के लिए मैंने आपको एल्जेब्रिक में ये बताना है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जहां पर बराबर होते हैं, उस पॉइंट पे आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। इट मींस वहां से आपको अपना प्राइस डिटरमाइन कर सकते हो। बट आपको मार्जिनल कॉस्ट तक ले जाने के लिए मुझे थोड़ी सी अभी मेहनत करनी है। मुझे ये बताना है कि डिमांड क्या है, जो मैंने आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। मुझे ये बताना है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड। आई हैव टू टेल यू दैट व्हाट आई मीन बाय प्राइस इक्वेशन। आई विल बी टेलिंग यू हाउ आई कैन डिटरमाइन दिस प्राइस इक्वेशन। नाउ टुडे इन टुडेज लेक्चर, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताना है। बेटे आज का ये जो लेक्चर है ना, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एज ए ACCA कम फाइनेंस मैनेजर, एज ए ACCA कम मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज ए ACCA कम CFO, एज ए ACCA कम डिसीजन मेकर, आपको कई बार ये भी देखना है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो सामने वाला उसका क्या रिएक्शन करेगा। अगर मैंने प्राइस को हल्का सा चेंज कर दिया तो सामने क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज होगी, बिकॉज वी नो दैट प्राइस इज इंडिपेंडेंट फैक्टर एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज डिपेंडेंट फैक्टर, वी नो दैट। सो वी वांट टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप। हम मोहब्बतें निकालना चाहते हैं किस किस के बीच में, अमिताभ बच्चन के बीच में और अभिषेक बच्चन के बीच में, कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ फादर एंड सन। Similarly, I want to find out the relationship between price and the quantity demand. कि अगर मैं 5% से प्राइस को ऊपर या 5% से प्राइस को नीचे कर देता हूं, तो डिमांड कितने परसेंट से ऊपर या डिमांड कितने परसेंट से नीचे हो जाएगी। इस अनुपात को, इस रेशो को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मेट में जब करेंगे तो उसका नाम होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटे इतना इंपॉर्टेंट लॉजिक है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, कैप्लन में भी है, बीबी में भी है, हमें डिस्कस करना है, आपको तभी समझ आएगा। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, तो आप इस लेक्चर को ढीला मत माने, मैं भी आपको दिखा रहा हूं। आप पहले देखिए ना, डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर, 10th लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा व्हाट आई एल्जेब्रिक का, तब भी नहीं बताऊंगा, मैं आपको जस्ट बताऊंगा व्हाट आई मीन बाय मार्जिनल कॉस्ट एंड व्हाट आई मीन बाय मार्जिनल रेवेन्यू एंड हाउ वी कैन प्रिपेयर अ ग्राफ फॉर दैट। और उसके बाद बताऊंगा जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इंटरसेक्ट करते हैं, वहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो यू कैन कैलकुलेट प्राइस। मेहनत है बेटे करने को, तो मैं खाली मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बताया था, चैप्टर क्लोज हो जाता है। बेटे अगर ऐसे थोड़ी होता है। आइए आइए आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने 10-12 मिनट का एक छोटा सा वीडियो मैं अटैच कर रहा हूं। मैंने किसी दूसरे कोर्स में लिया, लेकिन वहां पर प्राइस इलास्टिसिटी की जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी, द रियल लाइफ एग्जांपल्स व्हिच आई हैव गिवन, the explanation, the concept, the energy level which I have shown is marvelous. मैंने जब अपनी वीडियो को देखा तो मैंने 10 में से 10 नंबर दिए, और मुझे लगा कि मैं आपको बेस्ट क्यों ना दूं, इसलिए मैंने वो 10-12 मिनट का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वीडियो अटैच किया है। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके कैप्लन में भी और आपके बीबीबी में भी ये सब कुछ है। ये देखिए, ये बीबीबी इलास्टिसिटी एंड प्राइसिंग डिसीजंस,
बेटे प्राइसिंग डिसीजंस आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लॉजिक्स को, कंसेप्ट को समझे बिना ले ही नहीं सकते. दैट what I mean by price, how we can calculate the price and how they are sensitive to each other. इसके थोड़े से चेंज में इसमें कितना बदलाव आता है. तो हम कहते हैं यार ये पेशेंट नहीं है. जैसे आपके 3 दोस्त हैं, है ना, तो आपका एक दोस्त है, आप उसको 10 बातें बोलते हैं, तेरे में ये कमी है, तेरे में ये है, तेरे में ये, कुछ नहीं बोलता. लेकिन दूसरा दोस्त है, उसको आपने अभी 6 बातें बोली तो 6 बातों के बाद उसने रिएक्ट करना शुरू किया. लेकिन जो तीसरा है उसको आपने 2 ही उसके नेगेटिव बताए, उसने 2 बातों के बाद ही नेगेटिव रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया. तो पेशेंस सबसे ज्यादा किस में हुई? जो सबसे पहले वाला था जिसने 10 के बाद रिएक्ट किया. उससे कम पेशेंस किस में हुई? जो बीच वाला था जिसने 6 नेगेटिव के बाद रिएक्ट किया. और सबसे लेस पेशेंट कौन सा, इम्पेशेंट इंसान कौन सा होगा? बेटे 2 नेगेटिव सुने नहीं और उसने रिएक्शन किया नहीं. मैं भूपेश आनंद आप सबसे यही बात कहना चाहता हूं कि दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम इनकम की रिलेशनशिप, इनकम के चेंज के बाद डिमांड में कितना चेंज आएगा, प्राइस के चेंज के बाद डिमांड में कितना चेंज आएगा, और दोनों के चेंज के बाद डिमांड में कितना चेंज आएगा, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्मेट में, फॉर्मूले में करना चाहते हैं. वो बातें मैंने आपको कैप्लन से बतानी है. ये देखिए जी, कैप्लन में भी तो लिखा हुआ है, ये देखिए कैप्लन में भी तो है, ये रहा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब उन्होंने कहा है व्हेन अ बिजनेस प्रपोजेस टू चेंज, सोच रही है, अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, द की क्वेश्चन इज एट टू व्हाट डिग्री द डिमांड विल बी अफेक्टेड. कितने डिग्री से वो चेंज हो जाएगा. आप इतना बदलोगे तो सामने वाला कितना बदल जाएगा. इस अनुपात, इस रिलेशनशिप, इस रेशियो, इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मेट को हम प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं. बेटा ये फॉर्मूला इन्होंने डिराइव किया, बट मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, ऐसे प्यारी प्यारी बातें बताऊंगा कि वो फॉर्मूला आपको खुद ही याद हो जाएगा. बेटे करना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा. तो आइए उसके बाद हम इसकी इंटरप्रिटेशन सीखेंगे. बट आई मीन बाय इलास्टिक डिमांड, जब अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आता है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आती है तो हम कहते हैं 30% है, 50% है, तो उसका कुछ इंटरप्रिटेशन होता है ना. सिमिलरली इसका भी इंटरप्रिटेशन है, वो सीखेंगे, है ना. बड़ा मजा आने वाला है. आप देखिए ना, मैंने आपके लिए गाना भी रखा है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये गाना. सुनिए जरा गाना कह रहा है. अच्छा ठीक है, अभी गाना चांस की बात है, इसमें नहीं है तो हम नहीं कर रहे, अभी कोई ऐसी बात नहीं है. आओ जी, आप अब एक बात और सुन लेंगे. बेटे लाइफ में आपको ये समझना है कि यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. ये बात मैंने बताई. बेटे जो 10-12 मिनट का मैंने वीडियो अटैच करना है ना, आपको उसके नोट्स बनाने हैं, खाली बैठना नहीं है. हम मिल रहे हैं लेक्चर नंबर 10 में मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू के लॉजिक्स के साथ. Cross price elasticity, what is income elasticity, all these elasticities we will discuss in relation to demand. It means when there is a small change, when I say there is a small change in the price, how much change will be in the quantity demanded. When there is a small change in the price of the same product which we are purchasing, how much change will be there in quantity demanded. I will say that is price elasticity. So when I say elasticity, it means sensitivity. So let's start writing first point, elasticity of demand. Firstly, I am giving you the meaning of elasticity of a demand. It means sensitivity. When sometimes you drink cold water, some sensitivity is there in your teeth. So that sensitivity, that is named as elasticity. So elasticity of demand is the sensitivity. Elasticity of the demand is the sensitivity. So please prepare the notes. I am telling you again and again. Please prepare your class notes along with my lecture, because that will be fruitful and you can revise it quickly. All basic crux I have given here. So elasticity of demand is the sensitivity, it is a sensitivity. When I say a sensitivity, it means a ratio of percentage change in one variable with respect to
percentage change in another variable. It means if there is a change in this variable, when I say change, either increase or decrease, then how much change is in this variable, that is either increasing or decreasing, that is named as elasticity. Now in case of elasticity of demand, I will keep the base as percentage change in. Sometimes I will keep the I will in the numerator. In the numerator, I will keep percentage change in quantity demanded. Percentage change in quantity demanded. It means if denominator changes, if I change the denominator, then how much will be the change in the numerator? That is elasticity of demand. So please write in for a point. First point, elasticity of demand is a sensitivity, a ratio to the percentage change in one variable. In one variable, a ratio to the percentage change in one variable with respect to change in another variable. Following are the three elasticities of demand we have to discuss. I have just told you today in learning outcome number A, I will be discussing with three learning outcomes, three elasticities. One is price, own price or just price elasticity of demand. Second is cross price elasticity of demand. Third is income elasticity of demand. So I will be telling you each and every point. No need to hurry. Just write down firstly. Own price elasticity of demand, cross price elasticity of demand, and income elasticity of demand. So we will be watching each of elasticity in a separate note, separate point. So first point, firstly I am going to start with what is the meaning of own price elasticity. When I say own price elasticity, it is the percentage change. It is the percentage change in quantity demanded, because we don't calculate an absolute, we always calculate price elasticity in relative terms. So it is a percentage change. Now point is whether I am doing price elasticity, whether I am doing cross elasticity, or whether I am doing income elasticity, I will take numerator as common, and in the numerator I will be taking as percentage change, percentage change, percentage change, percentage change, delta percentage in a demand, in a quantity demand. So numerator I will be taking into account percentage change in quantity demand, and in the denominator firstly I will be taking price, then I will be taking cross price change in this, and then I will be taking income, percentage change in income. So no need to worry, just listen to me. Firstly I am doing own price elasticity. When I say own price elasticity, it means percentage change. It means it is a ratio. It means it is a ratio of change. It is a percentage change in quantity demanded. It is a percentage change in quantity demanded with respect to. It is a change in this with respect to. It means firstly there will be a change in price, and then there will be a change in quantity demanded. With respect to price percentage change in price of the product. I repeat, price elasticity of demand means that if there is 1% change in price, then by how much percentage change will be there in quantity demanded? I can say it like this also. So price is the independent factor and quantity demanded is the dependent factor. So firstly there will be a change in the price, and due to that there will be a change in quantity demanded. So that aspect which is being catched by a ratio, by a elasticity, it is named as own price elasticity of demand. No need to learn the formula, but I have written the formula also. Percentage change in quantity demanded. Numerator is same in all the types of elasticity. Just we will be changing the denominator and we will be knowing the concept. So percentage change in quantity demanded upon percentage change in own price. Percentage change in quantity demanded upon percentage change in own price, that is named as own price elasticity. Now the point is
The coefficient which we calculate, the coefficient which we calculate by dividing numerator upon denominator, we will be getting one coefficient. Now this coefficient is named as price elasticity. Now this coefficient can be greater than 0, it can be equal to 0, or it can be less than 0. Mostly it will be not equal to 0, it will be equal to 1. Now, when it will be equal to 1, when the percentage change in price is equal to percentage change in quantity demanded. When both the percentages are same, I will say my price elasticity will be equal to 1. That is very logical, very intuitive. Now when it will be greater than 1, when my numerator will be more than, when my numerator will be more than denominator, it means when there will be a more change in quantity demanded as compared to change in price, then only my price elasticity will be greater than 1. You're getting a point? It means if I'm changing price by 1%, my quantity demanded is being changed by 5%, more than 1%. So I will say that my product is more elastic. More elastic. So just see the interpretation I have written for you. Example: Mr. A is currently consuming 2 liters of liquor. It is a hypothetical example. Just I want to clear you the concept in regard to price elasticity. He is drinking 2 liters of liquor in the evening, and he is drinking 10 liters of milk in the morning after workouts. You getting a point? Drinking 10 liters of milk in the morning after workouts and 2 liters of the liquor in the evening before dinner. Now there is some X price for milk, and there is some Y price for liquor. This is existing position. But suppose there is an increase in the price of liquor as well as in the milk. Let us assume that there is an increase by 1%, 5%, or let us assume there is an increase in prices by 10% in the milk prices as well as in liquor prices. The prices have increased by 10%. Now, if there is an increase of 10% in the prices, now we have to see whether Mr. Ram or Mr. X or that person, he is consuming the same level of quantity as before, or he has changed something. Supposingly, Mr. Ram is still consuming 2 liters of liquor. Mr. Ram is still consuming 2 liters of liquor even after increase in the prices. So I will say this liquor product has a very inelasticity. It does not have any elasticity, because even if the price has increased, there is no change in quantity demanded. So that type of elasticity is named as inelasticity. Inelastic. But supposingly he has started consuming only 3 liters of milk now after the increase in the price. So I will say that price elasticity of milk, it has elasticity because there is a change in the quantity demanded. So as the name indicates, when there is a change in the quantity demanded due to change in the prices, then I will say this product has a price elasticity. And when there is a no change in the quantity demanded, irrespective of the change in the prices, I will say that product is inelastic. This is very logical, very intuitive. No need to explain it more. Okay. So please write down the example. Mr. Ram is currently consuming 2 liters of liquor and 10 liters of milk. Suppose price per liter of liquor and milk has been increased by 10%. Now Mr. Ram is only consuming 3 liters of milk after increasing the prices, but is consuming 2 liters, 2 liters of, this is not milk, this is liquor. He has decreased the consumption of milk from 10 liters to 3 liters, but he has not decreased the consumption of liquor from 2 liters to 2. He is on the same consumption, 2 liters. So we can conclude that price elasticity of demand for milk is very high. There is a elasticity of
milk, but we can also conclude that in case of liquor there is no price elasticity. The price elasticity of demand for liquor is very low, or I can say it is inelastic. So let's start with the journey. I have given you one more example, just to understand the concept. Suppose if the price of the milk or any product is increased by 10%, I am just assuming that 10%, and quantity demanded of the milk decreased by 12%. It can happen. Price is independent factor and quantity demanded is dependent factor. So I am taking numerator in the denominator, in the numerator, dependent factor in the numerator and independent factor in denominator. So my calculation will be 12% by 10% as per the formula, as per the logic. Even there is no need to learn the logic. 12% upon 10%, that comes to 1.2. Now, price elasticity is always in terms of negative. No doubt we don't write down negative, but it is always in terms of negative. So just see, I have written 1.2. Now, when I say 1.2, now what it means, if it means there is elasticity. Now, when it is greater than 1, in note number 1 I have given, if price elasticity is greater than 1, if price elasticity is greater than 1, it means if for every 1% change in price of the product, quantity demanded will change by more than 1%. I will say the demand is elastic. So please write down. I will say the demand is elastic. The demand is elastic. Note number 2. If price elasticity, all price elasticity is less than 1. Now if I see mathematically when it will be 1, less than 1, when my numerator is less and denominator is more, then only my coefficient will be coming as less than 1. It means the quantity, the product which we are dealing is, that is not so much elastic. So we can get an idea that whether my product in which I am demanding, which I am purchasing, that is elastic or that is not so much elastic. If it is greater than 1, then it is elasticity is there. If there is less than 1, then there is no elasticity. If the price of a product increases by 5% and the quantity demanded decreases by 1%, it is but obvious that when price will increase, the quantity demanded will decrease. But price is increasing by 5%, but the quantity demanded is decreasing only by 1%. So if I want to calculate price elasticity, then it will be 1% upon 5%. That comes to less than 1, or I will say very, very minute figure is there. Very minute figure is there, and then demand is not sensitive and hence it is inelastic. So I have covered all price elasticity. When I say elasticity, I mean it is sensitivity. When I say sensitivity, it means what is the percentage change in quantity demanded with respect to percentage change in own price of that product. Now I am going to start with cross price elasticity of demand. It means what is the change in the quantity demanded of a product? What is the change in percentage quantity demanded of a product with respect to change in the price of related goods, not of own goods. There is a difference in own price elasticity and cross elasticity. In own price elasticity, I am considering the percentage change in the same product which I am demanding. But in cross price elasticity, as the name indicates, cross price elasticity, I want to find out the change. I want to find out the ratio of change in percentage in quantity demanded with respect to the change in the price of, not of this product, with respect to percentage change in price of related goods. For example, if there is a change in the price of Audi car, if I want to find out, for example, I want to calculate the elasticity of BMW, and there is and in this I am using the formula percentage change in quantity demanded of BMW divided by percentage change in price of Audi, not of BMW.
It means I want to see that if my related good will change, the price of the related good will change, then how much effect will be in this product, in product number X. If there is a change in product number Y prices, how much it will affect my product number X. You are getting a point? Now, if it is greater than 1, please tell me if it is greater than 1. Audi and BMW are substitutes. They are on the same, top cadar, I will say. BMW and Audi are on the same cadar. So if there is a substantial increase in the prices of Audi, the quantity demanded of BMW will increase like anything. So I will say that this cross price elasticity is greater than 1 because numerator will increase. The percentage change in BMW car will increase more. Numerator will be more. In that case, I can say that if cross price elasticity is greater than 1, then I will say these two products are related products and they are substitutes. I repeat, substitutes. I repeat, substitutes. So please write on this point number 8. It is the percentage change. I'm writing for cross price elasticity. It is the percentage change in the price, in the quantity demanded. I have told you whether it is price elasticity, whether it is cross price elasticity, whether it is income elasticity. In the numerator, we have to see what is the effect in the change in the quantity demanded. So it is the percentage change in quantity demanded with respect to change in price of some other good. With respect to percentage change in price of some other good. Following is the formula: percentage change in quantity demanded upon percentage change in price of related goods. Now, this is now important for examination. If cross price elasticity is greater than 0, now when it will be greater than 0? When coefficient will be greater than 1, when numerator is more than denominator. Now when I say numerator, it is percentage change in quantity demanded, and when I say denominator, it is percentage change in price of related goods. It means these products are the price, these products are substitute goods or substitute products. So please write on B point. If cross price elasticity is greater than 0, that is positive. That is positive. It implies related goods is a substitute good. It implies the related good is a substitute good. So I have given the example, if the price of Audi car, this I have provided as Audi car, has increased substantially. If the price of the Audi car has increased substantially, then there will be increase in demand of BMW. Then there will be increase in demand of BMW. So if I want to calculate price elasticity of BMW, and then my formula will be, then cross price elasticity of BMW, then my formula will be percentage change in quantity demanded of BMW upon percentage change in the prices of Audi. If there is a greater than 0 positive, then I will say BMW and Audi are substitutes. But if it is less than 1, then I will say these products are complementary. So write down C point. If cross price elasticity is less than 0, that is negative. That is negative. I will say these products are complementary goods. I will say these products are complementary goods. If the price of petrol increases, then substantially the automatically price of automobile would decrease. Would increase. I beg my pardon. Would increase. And the last point which I'm going to start with, before that I want to just show you Google Baba.
Google Baba that what is the meaning of elasticity of demand. When I say elasticity, demand elasticity measures a change in demand for a good when another economic factor changes. Now there can be three economic factors. One is price of the same product. Second is price of the related product. Third is the income of that particular person who is consuming that. Demand elasticity helps firms model the potential change in demand due to change in the price of the goods, the effect of the change in prices of other goods, and many other important factors. A grasp of demand elasticity guides firms towards optimum competitive behavior. And I will say these are the different, elasticity of demand. If it is greater than one, if it is greater than 1, if it is greater than 1, then how it will show, I will be telling you. And if it is less than 1, how we can calculate through the help of graph. Measurement of elasticity, when it will be kink, when it will be perfect, that we will be doing in form and other structures. So let me firstly complete with this income elasticity. Now this is the most important testable area.